Assalamualaikum class 5. This is Khaled, and I hope that you had a wonderful Eid. So, this is the first lecture that we are having after Eid holidays. So, we are going to start from where we actually left off. That was regarding uh, these things. We studied hills, rivers, lakes and waterfalls. So today our topic is related to another topic that is related to water, and that is springs. Now springs, they are basically underground water, take it, and they come up to the surface and they flow, and this water is usually pure and clean, and it's also drinkable. So let's read about springs. The earth's surface absorbs rainwater. So we know that whenever it rains, the ground get wet, and afterwards the ground is dry, because what happens is that all of the water on the surface of the water on the surface of the earth is absorbed back into the earth. So the earth's surface absorbs water when there is abundance of rain. मतलब बहुत ज़्यादा abundance means something that is in large quantity. Okay, when there's a lot of rain, the water accumulates and flows. So what happens, water जो है accumulate का मतलब होता है जमा हो जाना, ठीक है, किसी एक जगह जमा हो जाता है और फिर क्या होता है कि वो flow करने लग जाता है, बहने लग जाता है. This is known as a natural spring. So even if there is a lot of rain and the water, it just accumulates and it flows, especially after it is absorbed back into the ground, then this is known as a natural spring. The water from the springs is rich in minerals and is very clean and healthy for drinking. So water jo hai, it's very healthy, and it's full of minerals, and it's drinkable as well. Some natural springs, however, have a high content of minerals such as sulfur and other metals. The water from such springs is good for bathing but not for drinking. So not all spring water is good for you. Some is immensely, tremendously very healthy for you to drink, but there are some springs as well that carry with them a very high content of sulfur and other metals. So usually such sort of water is not preferred to be uh, drunk, but it can be used for other purposes like washing, cleaning, or taking a bath with that water. Okay, so spring क्या है कि underground water होता है, ठीक है, जमा होता है, और फिर क्या होता है कि naturally जो है it comes to the surface and it starts flowing, and usually such water is drinkable, but there might be a few spring waters that are having that is actually having a very high content of sulfur and other metals, and it is preferred not to drink it. Okay, rapids. When a river flows downstream through rocks and cliffs, the water comes down with a great force and it moves with great speed. So we know it's the law of the nature. If anything is falling from a great height, then definitely that thing would pick up speed and it would fall very hard to the ground. So the same thing goes with the river water as well. When it falls from a height, okay, when it is coming down through cliffs and rocks, okay, so it moves with a very great speed. This section of a river is known as a rapid. तो जहाँ पे जिस पॉइंट पे ये बेसिकली रिवर जो है वो उसकी वाटर की रफ्तार तेज़ होती है, when it comes down with great force, then such section, ये जो हिस्सा होता है रिवर का, इसे हम रैपिड कहते हैं, ठीक है. It is extremely dangerous to swim or sail a boat in this water. So it's very dangerous because it's moving at a very high speed, so you might get dragged down under the water if you ever happen to be swimming or boating in this section of the river. Discover. Okay. Now coming to the next one is natural vegetation. So we have covered springs. Underground water hota hai, surface pe aata hai, this water is drinkable, but some of the springs water they carry a very high content of sulfur and other heavy metals, so it's not preferred to drink such water. The next one is rapids वो section of the river होता है जो basically जहाँ पे water जो है वो rocks and cliffs से नीचे आते हुए काफ़ी speed पे आता है, और ये section जो है काफ़ी ख़तरनाक होता है. It's suggested that no one goes into these waters, especially when they
are in a section known as rapid. ओके, नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है कि जो भी ज़मीन से चीज़ें उगती हैं, ठीक है, वेजिटेशन। नेचुरल का मतलब है जो नेचुरली अकर करती हैं। सो लेट्स सी व्हाट नेचुरल वेजिटेशन इज़। Life on the planet Earth breeds and exists in different climatic regions. Okay, so life जो अर्थ ब्रीड का मतलब होता है कि पैदा होती हैं, ठीक है, लाइफ ऑन अर्थ जो है वो पैदा होती हैं और डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स में जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। क्लाइमेटिक रीजन्स का मतलब होता है इट्स रिलेटेड टू क्लाइमेट। क्लाइमेट मीन्स the weather conditions of an area over a very long period of time. For example, जैसा पाकिस्तान में जो आपकी क्लाइमेट है, समर्स की क्लाइमेट है, ठीक है, ये काफ़ी अरसे से चली आ रही है। एंड एवरी ईयर वी नो दैट फ्रॉम मे टू August or September it is quite hot and humid, so it's a natural climate of Pakistan. Okay, the physical surface of the land has many variations फ्रॉम डेंस फॉरेस्ट टू बैरन डेजर्ट्स। ओके, जो फिजिकल सरफेस है, जो आपको सरफेस लैंड की नज़र आती है पूरी अर्थ पे, ये काफ़ी इसमें काफ़ी वेरिएशंस है। वेरिएशंस का मतलब होता है काफ़ी चेंजेस हैं कि आपको घने जंगल भी नज़र आते हैं, ठीक है, और आपको जो है वो सहरा भी। बेरन का मतलब होता है कि जहाँ पे कोई चीज़ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर एग्जांपल, यू माइट कॉल अ डेजर्ट अ बेरन प्लेस because it's not having a lot of vegetation, ठीक है, it's not having any greenery on it, तो ऐसे जगह को हम barren कहते हैं। ओके, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ क्लाइमेट, टेरेन एंड सॉइल। सो अब ये फिजिकल सरफेस ऑफ द अर्थ जो है ये हर जगह चेंज होती रहती है। अब वजह क्या है कि क्लाइमेट की वजह भी है, टेरेन का मतलब होता है कि जो सरफेस ऑफ द अर्थ है वो भी बड़ी मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ there's a mountain, you won't see much vegetation on the mountain because उस mountain की जो terrain है, उस mountain की जो surface है वो काफ़ी rocky है और उसमें कोई ऐसी soil भी नहीं है जो basically helpful हो कि वहाँ पे vegetation grow करे। Okay, these factors decide the kind, quantity and time period of plants to grow. So definitely if plants are growing on different kinds of terrain, different kinds of soil, ठीक है, so it would take different time periods for any plant to grow. So its growth would be affected by the terrain, climate and soil. Okay, these regional classes on the basis of predominant vegetation are called biomes. Okay, तो ये जो जो आपकी रीजनल इन्होंने क्लासेस बना ली हैं। फॉर एग्जांपल, एक रीजन आपका कोई डेजर्ट का है, एक रीजन आपका कोई फॉरेस्ट का है, ठीक है, तो वहाँ पे जो प्रीडोमिनेंट का मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा किसी तादाद में जो है वो डोमिनेंट हो, उगे वगैरह, ठीक है। तो वेजिटेशन जो प्रीडोमिनेंट है डिफरेंट रीजन्स के अंदर, उनको हम लोग बायोम्स कहते हैं। और ये बायोम्स जो हैं बेसिकली वो इंक्लूड करती हैं डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, श्रबलैंड्स एंड टंड्रास, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपकी यू कैन से बेस्ड ऑन द प्रीडोमिनेंट वेजिटेशन, तो यहाँ पे इन्होंने रीजन वाइज जो हैं वो उन एरियाज़ को क्लासीफाई किया हुआ है एंड दीज रीजन्स आर नोन एज बायोम्स, ठीक है। बायोम्स जो हैं वो डेजर्ट इंक्लूड करते हैं, ग्रासलैंड्स इंक्लूड करते हैं, श्रबलैंड्स इंक्लूड करते हैं और टंड्रास वगैरह भी इंक्लूड करते हैं। So I hope that you have understood this topic well. Now coming to the next one, deserts. Okay, a desert is a land surface that is dry and hot. तो ये desert जो है, सहरा एक लैंड सरफेस होती है जो बहुत ज़्यादा खुश्क होती है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है। इट इज़ अ वास्ट एरिया ऑफ सैंड। वास्ट का मतलब होता है बहुत बड़ा एरिया। एंड ग्रेवल विच गेट्स लिटिल विद ग्रेवल विच गेट्स लिटिल और नो फॉल इन द ईयर। सो ये जो है बहुत बड़ा एरिया होता है सैंड का। ग्रेवल का मतलब होता है जो छोटे छोटे पत्थर आपके होते हैं, ठीक है, या कोई भी पत्थर आप कहते हैं, ठीक है, जो कि अब ये लैंड जो है इसको कोई रेनफॉल रिसीव नहीं होती, बहुत कम होती है अगर हो भी, ठीक है। एज द वेदर इज चेंजिंग इन द वर्ल्ड, द डेजर्ट्स आर enlarging. So what is happening nowadays that due to our usage of cars and due to the burning of so much you can say petrol, diesel and the powerhouses that are producing electricity for us, so what is happening that the earth is getting warmer and this is causing
the climate and the weather conditions of the different areas of the earth to change. So what is happening, it's affecting us negatively, and the areas that were once you know uh, good and they were able to support life, but now they are slowly turning into deserts, ठीक है. लेकिन अब enlarging का मतलब ये कि अब definitely सा weather change हो रही है, किसी जगह बारिश अगर नहीं पड़ती, so what happens then, that things stay dry and the surface of the earth also suffers, and everything green that you see on the earth, it disappears because of having no rainfall. Okay, तो ये डेजर्ट एरियाज जो हैं ये अर्थ में बर्ड हैं बिकॉज ऑफ द चेंज इन वेदर पैटर्न्स. दिस इज़ बिकॉज देर इज़ लेस रेनफॉल एचर. ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बारिश वगैरह जो नहीं होती. वी नो दैट every living thing, it survives and depends on water, and if it cannot get water, then what would happen, it would just fail and it would just die. Okay, so, okay, now Sahara in Africa is the largest hot desert in the world. Okay, while Gobi is the largest desert in China, some other deserts are the Central Australian Desert, uh, Atacama Desert in South America, Arabian Desert in Saudi Arabia, and Kalahari Desert in Africa. So these are the names of the famous deserts, famous and big deserts all around the world. ठीक है, सहारा आपका अफ्रीका के अंदर है, गोबी चाइना के अंदर, अरेबियन डेजर्ट जो है दैट इज़ इन सऊदी अरेबिया, कलहारी इज़ इन अफ्रीका, एंड सेंट्रल ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट इज़ इन ऑस्ट्रेलिया. ओके, एटाकामा डेजर्ट जो है वो भी आपका साउथ अमेरिका के अंदर है. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन. Different types of landforms. Okay, fine. The largest desert is found in west. Now coming to the Pakistan. Now coming to Pakistan actually, तो the largest desert जो है वो पाकिस्तान में जो है वो वेस्टर्न बलूचिस्तान में जो है वो पाया जाता है, is found in western Balochistan. The desert regions in Pakistan are in the साउथ ईस्ट. ओके, सो साउथ ईस्ट में जो है वो बेसिकली आपके पाकिस्तान के डेजर्ट रीजन्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं. द थर्ड डेजर्ट ऑफ सिंध इज़ ऑल्सो नोन एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. तो सिंध में एक डेजर्ट है जिसका नाम है हमारा थर्ड डेजर्ट. ठीक है, तो इसको हम लोग ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं. पार्ट ऑफ थर्ड डेजर्ट दैट एक्सटेंड्स इनटू पंजाब इज़ नोन एज Cholistan. So there's another desert in Punjab that is actually starting in Thar, but when it comes into Punjab, it is known as Cholistan. Cholistan and Thar deserts in Punjab are the driest and hottest places in the country. तो पंजाब में दो हैं आपके, एक क्या कहते हैं चोलिस्तान है, और दूसरा थल डेजर्ट जो है, और ये सबसे हॉट हैं और सबसे ड्राइएस्ट प्लेसेस जो हैं ये कंट्री के अंदर हैं. द सैंडी डेजर्ट ऑफ खरा इज़ लोकेटेड इन बलोचिस्तान. एक सैंडी डेजर्ट है करा का, वो लोकेटेड है आपका बलोचिस्तान के अंदर. ओके, तो सिंध के अंदर क्या है, थर है, और पंजाब के अंदर चोलिस्तान है, थल डेजर्ट्स हैं. ओके, नाउ कमिंग टू द सॉइल. द डेजर्ट सॉइल इज सैंडी विद ग्रेवल बोल्डर्स हिल्स एंड माउंटेन्स. तो अब डेजर्ट सॉइल जो है वो उसमें मोटे मोटे चंक्स होते हैं पत्थरों के, जिसे हम ग्रेवल कहते हैं. ठीक है, बोल्डर्स होते हैं. बोल्डर्स का मतलब होता है जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, दैट आर क्वाइट हैवी टू पिक, और हिल्स होती है और माउंटेन्स होते हैं. ठीक है, पार्ट्स ऑफ द डेजर्ट आर कवर्ड विद विंड स्वेप्ट पाइल्स ऑफ सैंड. तो डेजर्ट जो है उसमें क्या होता है कि आपको सैंड ही सैंड नज़र आती है, और ये सैंड जो है बेसिकली इट इज़ मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर by the winds. Okay, forming little hills known as sand dunes. तो आपने अक्सर देखा होगा कि अगर सहरा की, you might have seen a picture, so you would see that there are mountains of sand. तो उनको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स कहते हैं. द शेप ऑफ द सैंड ड्यून्स कीप चेंजिंग ड्यू टू द हाई विंड्स. देयर इज लिटिल वेजिटेशन इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड where only cacti and shrubs are its मेन वेजिटेशन. ओके, सो अब ये सैंड ड्यून्स की जो क्या कहते हैं आप माउंटेन्स की जो शेप है वो एक्चुअली चेंज होती रहती है, क्योंकि हाई विंड्स ब्लो करती हैं इन द डेजर्ट, और बहुत कम जो है वो इसमें वेजिटेशन ग्रो करती है डेजर्ट के अंदर. कैक्टाई है और श्रब्स को कहते हैं जो छोटे छोटे प्लांट्स आपके होते हैं. ठीक है, तो वो बेसिकली इसकी इन जगहों की जो है वो मेन वेजिटेशन. ओके, देयर आर सम डेजर्ट प्लांट्स विच रीच डाउन एज मच एज 12 मीटर्स इनटू द अर्थ इन सर्च ऑफ वाटर. सो प्लांट्स का एक ज़ाहिरी होता है कि आपको प्लांट नज़र आ रहा होता है, बट द रूट्स ऑफ द प्लांट्स दे आर ऑल्सो
very deep into the ground, and they might reach 12 meters in the earth for their search of water. Okay, other plants store large amounts of water in their leaves, roots and systems. So दूसरे plants भी डेजर्ट में पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने leaves और roots में बहुत ज़्यादा और stems में बहुत ज़्यादा पानी store करते हैं. The barrel cactus is a plant which bulges after a rainfall because it absorbs so much water as it can. So there is a special cactus plant known as barrel cactus plant. तो जैसी रेन होती है तो क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करके जो है वो स्वेल कर जाता है. स्वेल का मतलब होता है किसी चीज़ का आउटवर्ड्स जो है वो बल्ज कर जाता है, सॉरी, आउटवर्ड्स निकल जाना मतलब फूल जाता है इन अदर वर्ड्स. लेटर इट स्टार्ट्स टू श्रिंक एट एज इट यूजेस अप द वाटर इट हैज स्टोर्ड. फिर क्या होता है कि जब वो अपना पानी जो स्टोर किया हुआ पानी होता है जैसे उसको यूज़ करता है तो वो श्रिंक कर मतलब दोबारा पतला होने लग जाता है, श्रिंक करने लग जाता है. मैनी कैक्टाई प्लांट्स एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड हैव एन एबिलिटी टू स्टोर इट इन देयर ट्रंक्स. एंड तो बहुत ज़्यादा इस तरह के कैक्टाई प्लांट्स आपके हैं जो कैक्टस की फैमिली को बिलोंग करते हैं. तो ये क्या करते हैं, इसी तरह पानी को स्टोर करते हैं और फिर इसको यूज़ भी करते हैं. ओके, आयोसिस. आयोसिस जो है इसको देखें. This is also a body of water that is found in desert. और यूजली ये जो प्लेस होती है जहाँ पे आयोसिस जो है वो पाई जाती है, where it is found, you would see trees, okay, you would see plants going around that area. So this is आयोसिस. okay, ये वाला है, ये डेजर्ट है और यहाँ पे पानी की छोटी सी बॉडी है एंड यू आर हैविंग दिस ग्रीनरी ऑल अराउंड इट. ओके. There are there are fertile areas in the deserts where water collects from the ground streams and or springs. तो कुछ ऐसे फर्टाइल का मतलब होता है ज़रखेज़. फर्टाइल मीन्स कि जहाँ पे जो है वो चीज़ें उग सकती हैं. ज़रखेज़ का मतलब होता है जहाँ पे आप कोई बीज बोएंगे तो डेफिनेटली समथिंग इज़ गोइंग टू ग्रो आउट ऑफ द ग्राउंड. सो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं डेजर्ट्स के अंदर जहाँ पे वाटर जो है वो जमा हो जाता है ग्राउंड स्ट्रीम से और स्प्रिंग से. दीज एरियाज़ आर कॉल्ड आयोसिस. अराउंड द आयोसिस देयर इज़ वेजिटेशन ऑफ ग्रासलैंड एंड डेट पाम्स. तो इसके इर्द गिर्द जो है वो क्या होता है कि ग्रास वगैरह होती है, ग्रासलैंड होता है मतलब ग्रास होती है, उगती है, इसकी वेजिटेशन होती है, और डेट पाम्स की खजूरों के दरख्त की. द वेदर ऑफ द डेजर्ट चेंजेस ईच डे एज इट इज़ हॉट एंड ड्राई इन द डे एंड कूल्स डाउन इन द नाइट considerably. So coming to the weather pattern of the desert, one may find that the weather is extremely hot during the day, but as it gets nightfall, what would happen that the weather would cool off very much into the night. Okay, so these are the two things. These are the actually a couple of topics that we have covered. Approximately we have covered 5 topics today. So I would be sending you 2 questions of this chapter. So what are you supposed to do is first of all listen very attentively to this lesson, and secondly the questions that I'm going to send on WhatsApp, you need to write it down or copy it very neatly in your copies. Thank you.